everyone, welcome to my channel NCRT Knowledge. Today we will discuss Class 10 History, Chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe. First of all, we learn what is nationalism. Nationalism क्या है? Nationalism means the feeling of pride and belongingness towards one's nation. You can also say Desh Bhakti. Nationalism began in Europe with the French Revolution in 1789 and resulted in the emergence of a nation state. French Revolution of 1789 was the first clear expression of nationalism. Major changes took place during French Revolution like इक्वल राइट्स दी गई थी जिससे फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गई. New tricolor flag was formed. French became national language. New national anthem was adopted. Centralized administration system was established. French army started spreading the idea of nationalism. Internal customs and dues were abolished. State General was elected and renamed National Assembly. Before entering of Napoleon Bonaparte in France, everything was good in France. Like in 1789, he enters in France and in 1804, he declared himself as the Emperor of France. He brought Civil 1804 code in France, जिसके good और bad points थे. Good points were he abolished feudal system, freed peasants from serfdom, transportation and communication system was improved, he abolished privileges based on birth, he established equality before law and proper measure unit. And the bad points were censorship, no rights of women to vote, no right of women in property, and he forced people to join army. Mid of 18th century. In Europe, there were no nation and there were nothing like collective belongings. बट लोगों में नेशनलिज्म का आइडिया कैसे आया ये जानने से पहले हमें यूरोप के सोसाइटी के बारे में जानना ज़रूरी है. There were two types of people in the society of Europe. First, the aristocratic class means elite class, and the second, peasantry class, poor people. यूरोप में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई जिसकी वजह से एक और क्लास डेवलप हुई जिसका नाम था मिडिल क्लास. इसमें एजुकेटेड पीपल आते हैं लाइक बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स. एंड इनमें नेशनल यूनिटी थी, मतलब यहाँ पर लोगों में लिबरलिज्म था. लिबरलिज्म comes from the term liber means free. Example, political freedom and economic freedom. Like right to vote, individual rights and democracy. इन सब के अलावा यहाँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे जैसे कि जो लोग गरीब थे यानी पुअर थे उन्हें वोट देने का राइट नहीं था. यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बोर्ड्स और ट्रेड बैरियर्स को हटाने की मांग करी गई एंड इसके लिए एक कस्टम यूनिट फॉर्म हुई इन द इनिशिएटिव ऑफ Zollverein. And under custom union, trade barriers were removed. 30 currencies of Europe were reduced to 2. In 1815, Battle of Waterloo takes place. It was a battle between Napoleon and conservatives. Conservatives were those who used to follow primitive values. Their people wanted to bring monarchy system. और यहाँ पर नेपोलियन ये बैटल हार जाते हैं एंड द लिबरलिज्म क्रॉस ऑफ. लिबरल्स गोज अंडरग्राउंड. आफ्टर फिनिशिंग ऑफ बैटल ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइन और इसके दो प्रोविजंस थे. फर्स्ट, नेपोलियन
के लाए हुए जितनी भी चेंजेस थे उन्हें रद्द कर दी गई थी। एंड सेकेंड, सेटलमेंट ऑफ यूरोप मीन्स फ्रांस की बाउंड्री को लिमिट कर दिया। हियर कंजर्वेटिज्म वॉन एंड लिबरलिज्म हार जाते हैं और डर कर अंडरग्राउंड हो जाते हैं और सीक्रेट सोसाइटी बनाने का प्लानिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। और इन सब में लिबरलिज्म के एक मेंबर थे जो कि जोसेफ मेज़ेनी। ही वाज इटालियन रेवोल्यूशनरी। He was also the member of secret society of Carbonari. His main motive was to bring democracy in Europe. इनका मेन मोटिव क्या था? डेमोक्रेसी लाना यूरोप में। यहाँ ड्यूक का ये मानना था कि ये जो फाइट थी मेज़ेनी की कंजर्वेटिज्म के साथ, वो उनके लिए डेंजरस साबित हो सकती है इन सोशल ऑर्डर। नाउ 1830 to 1848, which is also known as Age of Revolution, conservatism tried to consolidate power. इनकी लड़ाई अब लिबरलिज्म के साथ साथ नेशनलिज्म के साथ भी थी, क्योंकि लिबरलिज्म जो थे वो नेशनलिज्म के साथ एसोसिएट हो गई थी। इन सब से बहुत सी एरिया में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी थी, जैसे कि पोलैंड, जर्मन स्टेट्स, इटालियन स्टेट्स एक्सेट्रा। जुलाई रेवोल्यूशन 1830। July Revolution 1830, also known as French Revolution. It was the second French Revolution after 1789. This revolution led to the overthrow of King Charles X, French Bourbon monarch, and the accession of his cousins Louis Philippe, Duke of Orleans. Means after दिस रेवोल्यूशन द किंग ऑफ बर्बन जो कि थे, बर्बन के किंग थे, वो जो थे ओवरथ्रोन हो गए थे। और इन्हें ओवरथ्रोन किसने किया था? जो लिबरल्स थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास। और यहाँ से मोनार्की सिस्टम हट चुकी थी और अब जो थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन चुकी थी। जुलाई रेवोल्यूशन मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की under the restored House of Bourbon to another, the July monarchy. Secondly, there was the replacement of the principle of hereditary rights by popular sovereignty. Supporters of Bourbons were known as legitimists and the supporters of Louis Philippe were known as Orleanists. इन दोनों के ही डिफरेंट सपोर्टर्स है। लाइक हर किंग्स के अपने अपने सपोर्टर्स होते हैं। तो बर्बन के जो सपोर्टर्स थे उन्हें हम लेजिटिमिस्ट कहते थे, उन्हें लेजिटिमिस्ट कहा जाता था। और लुइस फिलिप के जो सपोर्टर्स थे उन्हें ऑर्लेनिस्ट कहा जाता था। 1821 to 1832, Greek War of Independence. The Greek War of Independence is also known as Greek Revolution, and it was a successful war waged by Greeks to win independence of Greeks from Ottoman Empire. The struggle for revolutionary nationalism in Europe in 1821 sparked a struggle for independence amongst the Greeks. Support was sought from West Europeans and Greeks living in exile who had sympathized for ancient Greek culture. और ये जो ग्रीक के जो रेवोल्यूशन के सपोर्टर्स थे, इन्हें बहुत कोई सपोर्ट, जब हम कोई रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं तो हमें हेल्प चाहिए होती है, सपोर्टर्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे ग्रीक रेवोल्यूशन के टाइम ग्रीस के जो सपोर्टर्स थे वो कौन थे? पोएट्स थे, आर्टिजन्स थे, बिजनेसमैन्स थे, बहुत सारे थे। लाइक डांसर्स कह सकते हैं, म्यूजिशियन कह सकते हैं, ये सब थे। They also mobilized public opinion against the Muslim Empire. And finally, the Treaty of Constantinople recognized Greece as an independent nation. और यहाँ क्या था? Through the Treaty of Constantinople, ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का मतलब मान्यता मिल चुकी थी, या फिर उन्हें घोषित कर दिया गया था कि वो अब एक इंडिपेंडेंट नेशन है।